Assalamualaikum everyone. Thank you so much for joining. Today's name is Yabari, and we're going to be working on this beautiful grid. And I'm going to read a little bit about you, but before I start doing that, I wanted to go into this grid with a little bit of a different approach. So far we've been following the grids, we've been using the grids, but in this one, I highly recommend that you take a portion of this grid and completely fill it with one flat color. So it could be anything. I'm going to just draw it. And as I read what I will be sharing the insights about this name, you can keep continuing to work on it, right? So how I am seeing it, I'm taking my pen and I'm not thinking where I'm going to be creating. I just want you to come into the present moment, completely take a nice deep breath in, be fully here with me, and create a patch or a form or a blob, whatever it is. You can literally take your ink and spill it on the paper, but personally, I don't want to do that. So I'm going to use the inside space and create like a little wiggly shape. Now, which side I choose to color is I don't know yet. But as you will be working on the grid, I would highly recommend taking one side and completely filling it with flat one color and leaving a portion of it that is visible to you to guide you. That is also if you want to. If you felt like, oh my God, I'm so much enjoying the flatness of this space, I'm going to slowly bring that in and cover this, that's cool too. If you take a brush and you want to go within the lines here, not create a pattern or create a pattern, totally up to you. Give yourself the freedom to see the flatness of a color where you can create and you can work on top of it, and give yourself the space and the freedom where you're able to play with what is already existing. So then you're able to see both sides of the situations, that when we work with dunya, what happens, and when we create a dunya, what happens. The space that you will draw the patterns, of course, is going to be what was given to you. The space where you cover it up flat with a color and you work on top of it is the dunya that you are creating. What was given to you was equally beautiful. What you create in the dunya is equally beautiful. So we can't really say कि अच्छा ये वाला हमारे को जो दिया गया था वो घटिया था, मगर हम जो बनाएंगे वो बहुत ही जबरदस्त बनाएंगे. But actually वो जो आपको दिया गया था वो किसी मकसद से दिया गया था. आपके सारे experiences किसी वजह से आपको मिले थे. And so by valuing what Allah gave you, you learned the rules, you break the rules, and you create the rules. You see, one of the biggest powers, that most amazing power, biggest bhi hai aur amazing bhi hai, the power of creativity. From nothing, you can create. आपकी life कुछ भी हो, आपका past कैसा भी हो, आप चूज कर सकते हैं उसको आप आगे कैसे बढ़ाएंगे. You can create a life for yourself, but first it has to be done internally, right? So internally जब आप जाएंगे, आपने सारे rules देख लिए हैं, आपने सारी grid की ये जो portion है जो आप रखेंगे pattern. I'm just showing you as an example with my hands, but doesn't mean that's where you have to be. So this part is where the pattern stays, and this part is completely flat. This part represents what you have been given, your family, your experiences, your education, your loved ones, things that you like, the good emotions, bad emotions, ये सारा कुछ इस portion में नजर आएगा. ये portion वो है जो आपकी power है क्रिएट करने की, जो आप इसके ऊपर ये फ्लैट करेंगे आप कलर, और इसके ऊपर आप क्या बनाते हैं, क्या चूज करते हैं. Either you're going to use elements from this side, or you're going to completely shift it and create something out of the blue. That's totally up to you. Now, as I read Yabari, you'll get the inspiration through, so you can sit back for a few minutes and listen, or you can just jump into your piece and go crazy how you want to create it. Either way, both the energies are valuable as you start connecting to this name. It's a very profound name. मैं खुद थोड़ी सी हिल जाती हूँ जब अल्लाह मियाँ के नामों को पढ़ती हूँ और उनके बारे में लिखती हूँ. I always think कि यार ये इतना टाइम लग गया इनको इन तक पहुँचने में. But actually what happens is, when we are ready to receive what he wants to give us,
तभी हम रिसीव कर सकते हैं। एक मटके में पानी तभी आ सकता है जब मटका फुल फॉर्म में तैयार हो जाए। अगर वो गीली मिट्टी में है और उसके अंदर पानी आता है तो मटका बह जाएगा। इट वोंट बी हैविंग दैट स्ट्रेंथ to hold. The molecules would not have gone through fire. They would not have been glazing to protect its shape, and the water would just seep through the molecules और वो निकल के बह जाएगा. So Allah wants to protect your gifts. Allah wants to give them to you. He makes them like ट्रेलर में छोटी छोटी स्पेक्स में वो आपको ऊपर नीचे आगे पीछे बताता रहता है कि ये आपको मैंने बनाया इस तरह से, आपके अंदर ये वाला पानी डाला है। बट उस पानी को प्योर रखना, उस पानी की अहमियत करना, उस पानी के लिए तैयार होना is only and only when He knows you're ready for it. We can't rush the process or creation of Allah, because you see, when He calls Himself Ya Bari, He really, really wants us to focus that He is the originator of individuation. इसका मतलब है कि वो जो चीज शुरू करते हैं, वो जो चीज बनाते हैं, वो जो चीज क्रिएट करते हैं, उसकी कोई और कॉपी है ही नहीं। लाइक योर फिंगरप्रिंट्स, राइट? देयर इज नो कॉपी of your fingerprints. That is how original you are. I'm going to take you through this journey, and it's a slow journey, and it is slightly interactive. So I'll ask you a question, and all you have to do is unmute yourself and just answer the question if you feel up to it. Of course, you don't have to, but it's a beautiful way of energy exchange. जब आप जवाब दोगे, it'll just create a beautiful experience for all those experiencing in the moment and those later on listening, inshallah. So Al-Bari is the originator of individuation. Individual pieces of the design measured on leather. I've taken the text from my book here. Totally forgot to read from it, so I'll just do that. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Bari is the originator of individuation. Continuing with the metaphor of leather working mentioned above, Al-Bari would be the act of cutting out the individual pieces of the design that has been measured on the leather. While it is the beginning of individuation, nevertheless, it still remains in the condition of creation before physical manifestation. वो होता है ना जब आप कपड़ा काटते हैं, like या खालिक है कपड़ा बनाता है, right? That's how I'm giving the example. या बारी है जब दर्जी के पास आप कपड़ा लेके जाते हैं तो पहले वो कपड़े को काटता है, like आस्तीन काटेगा, उसके pieces काटेगा. So Allah is the one who knows exactly which piece sits with where, right? So for example, if he's stitching your garment of your being, उनको पता है कौन सी उंगली किस तरह से कहाँ पे सेटल होगी और कहाँ पे बैठेगी. So think of those pieces that created you, and this is the condition, this is the space where he's talking about या बारी. अभी पूरी physical manifestation हुई नहीं है, अभी सिर्फ recognition हो रही है of the pieces. ये वाला कपड़ा मैं दामन में लगाऊंगी, ये वाला कपड़ा मैं अपने आस्तीन पे चिपकाऊंगी, मैं ये वाली पाइपिंग इधर लगाऊंगी. You're just setting the tools. जैसे आप पेंटिंग करने बैठते हो तो आप कहते हो अच्छा मैं पानी लेके बैठती हूँ, मैं ब्रश लेके बैठती हूँ, मैं अपना ये वाला रंग लेके बैठती हूँ. Then you think of a color palette. So it's all preparing. जब आपको बनाया गया तो everything that needed for you to be constructed was placed in a certain order, in a certain way, ताकि वो आपको assemble कर सके. या बारी will assemble you and create. तो every piece, हर कपड़े का जो piece उन्होंने काटा आपके लिए to stitch you up, it was done with precision. It wasn't placed just ऐसे इसको उंगली इधर लगा दो या ये सेल उधर लगा दो या इसका लिवर यहाँ पे बिठा दो. हर चीज में अल्लाह ने प्रिसिजन रखी और पहले उसको ले आउट किया. So imagine the number of creation, plant kingdom, animal kingdom, space, under the ground, think of all the vastness, every single creation that he created with pieces that he cut out. He chose where to place, how to place, when to place, और एक एक चीज को अहमियत दी गई. This is why Allah, the reason Allah wants us to really go deeper into this understanding is ताकि आप अपनी अहमियत कर सकें.
अपने हाथ की, अपने बॉडी की, अपने इमोशंस की, अपनी लाइफ की, अपने एक्सपीरियंसेस की, अपने इतराफ जो आपको लोग उन्होंने दिए उनकी, लाइक हर चीज को अल्लाह ने सोच कर, I mean, he doesn't need to really think, but he knows that what will sit right next to it, right? So आपको बनाने के लिए उन्होंने एक एक चीज को place किया to see and to fit to make it right, because he knows what your creation will be, right? उनको पता है कि वो आपको किस लिए यूज करना चाहते हैं। आपका मटका इस दुनिया में जब आया तो वो मटका कैसा पानी होल्ड करेगा और कैसा पानी औरों को पिलाएगा, ये या बारी आपको लाइक सेट करते हैं बिफोर यू इवन एग्जिस्ट। अल बारी डिफाइंस द realm of Jabarut, where we find the origination of the divine names. It is how they exist. They are still not manifested in physical form, but they are individuated in as potentialities. What God creates is well proportioned and in a manner free from inconsistency, faults, blemishes, defects, and imperfections. ये कुछ वर्ड्स हैं जिनके ऊपर I'll try and expand a little bit. अल्लाह मियाँ जब बनाते हैं कुछ भी, जब वो अपने आप को कह रहे हैं कि मैं या बारी हूँ, तो वो आपको ये इंफॉर्मेशन देना चाहते हैं कि वो हर चीज प्रोपोर्शनेटली बनाते हैं, ना कुछ ज्यादा ना कुछ कम, ना कुछ पहले ना कुछ बाद में। उसकी एक उसकी इतनी वैल्यू है उनके दिल में कि वो आपको आपका हर एक लम्हे का भी लम्हा प्रोपोर्शनड होता है। एवरीथिंग इज इन अ सर्टेन मैनर, और उसके अंदर कोई इनकंसिस्टेंसी नहीं, कोई फॉल्ट नहीं। ऑफ कोर्स व्हेन वी थिंकिंग अबाउट अल्लाह and he's calling himself the creator, the originator, the one who makes everything individualized, we completely understand कि of course उसके अंदर इनकंसिस्टेंसीज नहीं हो सकती। ऑफ कोर्स उसमें फॉल्ट्स कैसे हो सकती हैं जब बना ही उसी जगह बैठने के लिए है, उसमें ब्लेमिशेस, डिफेक्ट्स एंड इम्परफेक्शंस कैसे हो सकते हैं? द नेचर ऑफ अल बारी इज टू मेक द यूनिवर्स लाइक दैट। अल्लाह ने यूनिवर्स में हर शय को हर शय को बनाया है individually. So important. Like every art piece that you create always comes from a certain inspiration. आप हवा को महसूस करते हो तो हवा की तरह ड्रॉ करते हो। आप घोड़ा देखते हो तो घोड़े को ड्रॉ करते हो। आप चिड़िया देखते हो, चिड़िया की उड़ान को, उसके परों को। You have something to be inspired by. Allah does not need an inspiration to create you and me. ही इज नॉट कॉपीइंग। एक बर्ड दूसरी बर्ड से नहीं इंस्पायर होती, एक इंसान दूसरे इंसान से नहीं इंस्पायर होती। एवरी ह्यूमन बीइंग इज इन इंस्पिरेशन ऑफ देम ओन सेल्फ। देयर इज नो अदर पर्सन लाइक यू। आपकी जब आपको बनाया जा रहा था तो जो थान का कपड़ा यूज किया गया आपकी जात को क्रिएट करने के लिए, वो कपड़ा किसी और के लिए नहीं इस्तेमाल किया गया, वो बनाया आपके लिए गया था। वो काटा और उसके जो जोड़ मोड़ तोड़ थे वो सब आपके लिए किए गए, और उनका जो यूज होगा आगे वो भी, या मुसव्विर जो क्रिएट करता है वो भी is going to be based on what he chooses for you. आपका कोई 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 नथिंग, जैसे बचपन में कहते हैं आई एम लाइक माई फादर, और यू बिलोंग टू माई फैमिली सो बिहेव लाइक योर फैमिली, you behave like you're a Pakistani, or Mexican people don't behave like this. ये labels जो हम लगा लेते हैं, you're not defined by culture, you're not defined by religion, you're not defined by anything but the essence, the root, the connection of Ya Bari. He has defined you in your way as an original piece of art. There is nobody after you who's going to be like you. There is nobody before you that's ever going to be like you. एक लायन देखने में एक जैसा लगता है, बिल्कुल लाइक एक दूसरे के जैसा लगता है, राइट? Mufasa can look like Scar, and Scar can look like, what's his name, Simba. Simba can look like somebody else. I don't know the future names, right? So you can think about it. लगते सब एक ही हैं सभी शेर, बट क्या वाकई सब एक हैं? हो ही नहीं सकते। हैं सब शेर, बट क्या सब एक ही जैसे शेर हैं? हो ही नहीं सकते, राइट?
And so the nature of Al-Bari is to make the universe like that. On a personal level, it can mean to free yourself from any unclean thing, to become free of guilt, and to become pure soul. You see, the whole journey of a soul is to come into this dunya, be in this dunya, exist in this dunya, but not become of this dunya. It's very clear. You come into this dunya, you are being in this dunya, you are living in this dunya, but you are not from this dunya. When you understand that, you are focused on your akhirat, and your akhirat is going to be what leads you to purify your soul on this planet. राइट कि मैंने तो ऊपर जाना है, यहाँ तो मैं सिर्फ जैसे आप दुकान में जाते हैं शॉपिंग करने के लिए, थोड़ी देर के लिए जाते हैं ना, या आप दुकान में रह जाते हैं, वहीं पे सो जाते हैं, नहीं, आप दुकान में जाते हैं, अच्छा फिर आप क्या पूरी दुकान खरीद के ले आते हैं? इज इट एवर पॉसिबल फॉर अ ह्यूमन बीइंग टू गो इनटू अ शॉप एंड बाय एवरीथिंग ऑन द शेल्फ? Can't be possible, right? You only go for that what you need. You learn, you say, oh, ये मेरे लिए fit होता है, ये मेरी expensive है, ये मेरे लिए अच्छा है, ये मेरी सेहत को ये करेगा, ये मेरी whatever करेगा, ये fruit chart में ये डाल सकते हैं, whatever it is that you go and buy, but you can never buy the whole shop. So think of dunya like that. You've come to the shop, you're going to only use and connect to the things that you need, what your soul came here to learn, and then poof, you have to get out of the shop because it's going to overwhelm you once you actually get what you need. I don't know if that happens to everybody or not, but then you're like, acha niklo, why are we wasting our time? कुछ चाहिए नहीं तो फिर यहाँ पे क्या घूम रहे हैं हम? Right? So we then move from that space to the next space. The healing aspect of Al-Bari is to remove or free oneself from disease. Meaning, आपको जब चीज मिल गई, आपको जब लेसन मिल गया, आपका जब दिल पाक हो गया, आपने अपने आप को प्योर कर लिया, तो फिर आप नेक्स्ट जगह पे चले जाते हैं और याद आपको रहता है कि यार मैं ना ये वापस चीज में नहीं घुसूंगी, मैं वापस दुनिया से नहीं अटैच होंगी, मुझे फ्री करना है वन सेल्फ फ्रॉम डिजीज। मुझे, मैं अगर कल मर गई तो मुझे अपने दिल में ये गंदगी नहीं लेके जानी दुनिया की, बिकॉज आई एम अ प्योर सोल। इट इज सो इम्पोर्टेंट टू कीप रिमाइंडिंग योर सेल्फ यू आर फ्रॉम, यू आर लिविंग इन दुनिया बट यू आर नॉट फ्रॉम हियर। टू रिमूव और फ्री वन सेल्फ फ्रॉम डिजीज, कोई नहीं चीज आपने दुनिया की अपने अंदर घुसेड़नी है, नो नीड फॉर अटैचमेंट्स और डिस्ट्रैक्शन is also an important part of the meaning of this divine name. कुछ भी गंदगी आप अपने अंदर नहीं लेकर जाएंगे, because that needs to be the goal basically. लेकर जाएंगे या नहीं वो तो अल्लाह ही बेहतर जानता है, but our goal is to try and not absorb too much inside of us so that we can stay pure and be constantly reminded of our akhirat. So when we think about it, Allah says here, Al-Bari is the originator of individuation. Then he says individuation pieces of the design measured on leather. मतलब वो pieces जो काट के उन्होंने leather के ऊपर सामने रखे हैं आपके. What God creates is well proportioned and in a manner free from, these are the words we're going to focus on, inconsistencies, faults, blemishes, defects, and imperfections. How many times have we all felt these about our own selves? The nature of Bari is to make the universe like that. यूनिवर्स में अल्लाह मियां ने जो भी चीजें बनाई हैं उसमें इनकंसिस्टेंसीज वो नहीं चाहते, उन कोई गलती हो नहीं सकती, कोई भी चीज में ब्लेमिश नहीं है। द लाइन इज क्रिएटेड एज इट्स मेंट टू बी, उसमें कोई गड़बड़ नहीं है, उसमें कोई डिफेक्ट नहीं है, उसमें कोई इम्परफेक्शन नहीं है। For me to be alive, I have to breathe. I sit with myself and I say, okay, hang on, I need to get to know your body really, really well. वो कह रहे हैं कि जब वो बनाते हैं तो उसमें ये सारी चीजें नहीं होती हैं, but मुझे तो हमेशा लगता है कि मेरे अंदर ये सारी चीजें हैं, right? So I ask myself, for an example, कि अल्लाह मियाँ मुझे कोई ऐसी चीज दे दो जिससे मैं अपने आप को या बारी के से नजदीक कर सकूं हर लम्हे. And so he speaks to me through this text. For me to be alive, I have to breathe. वो मुझे मेरे सांस लेने के एहसास से कनेक्ट कर रहे हैं. And for me to breathe, for example, I take in 100 molecules of air inside me and throw out 100 molecules of air outside of me. I ask myself, do I know which molecules within me am I going to throw out or take in? क्या मुझे और आपको पता है कि वो जो 100 मॉलिक्यूल्स अल्लाह कह रहे हैं कि मेरे अंदर जाएंगे वो कौन से होंगे?
Do you know the molecules that, the 100 molecules that you will breathe in or breathe out? Do you know these molecules at all? You can say yes or no. No. No, right? No. The next one is, am I in control of the quality of the molecules that I'm taking in and out? Not really. No. Are the molecules that I take in the same molecules as the one I breathe out? No. No. Do I know what the molecules have in them when I'm inhaling? Are they clean, filled with joy? Are they filled with sadness? Are they filled with anxiety? Do I know what these molecules are carrying as I take them in or throw them out? No. No. That what goes in and out of my body, an act which keeps me alive and happens so frequently, I supposedly say, I am breathing. Even that is not what I am in full control of. He chooses what molecules, which molecules, when those molecules, how those molecules get inhaled by my body and exhaled by my being. It's so important to understand the body takes in the molecules. The being gives back the molecules. There's a difference. Let me explain this. Through your lips, mouth, and lung, air goes inside, meaning it goes from the outside of the body and it enters the body itself. It goes through a system, and as it's going through that system, it absorbs bits from the system, and that what came in now has bits of your inside system, and then you exhale it out. वो जो आपने अंदर लिया, आपके मटके के अंदर जो गया, अब वो आपके मटके की मिट्टी से मिल गया, changed its form, and so something changes inside the molecules that go inside you. They get taken by the body, merged into the bits inside the body, and then it leaves the body becoming something new. वो जो आप अंदर लेते हैं, वो बॉडी के अंदर मिक्स करता है, उसके बाद आप उसको बाहर थ्रो करते हैं. And I was sitting with this, like the other day my daughter said, I don't like drinking from plastic bottles because it's not good for us. जब आप पानी की बोतल में प्लास्टिक की बोतल में पानी डालते हैं, तो पानी की जो the whatever the quality है, वो चेंज हो जाती है बाय द कंटेनर इटसेल्फ. वो प्लास्टिक के जो मॉलिक्यूल्स हैं उससे पानी पर इफेक्ट पड़ता है. वही पानी जब आप ग्लास की बोतल में डालते हो या किसी और मीडियम या मटेरियल के उसमें डालते हो, तो उसका एक अलग वो होता है. टेस्ट में कोई शायद डिफरेंस ना हो, but the chemical thing that happens or the water that goes through inside the bottle has connects with the container's medium, and then what you pour into your body will be different to that what was poured inside the glass or the whatever plastic bottle. So she said, I don't want to drink this because this is from a plastic thing, because I don't want to put plastic in me, right? Now, to make it simpler for us, because we are creative beings, I want you to imagine कि जो आपकी breath है, that what you breathe in is a yellow color. So जब आप सांस अंदर ले रहे हैं, तो you are taking in yellow color, right? So आप एक artwork है, and you're putting on yellow color on your sheet of paper as you breathe in. The color of your body is blue. जिस जिस्म में वो एक्सपीरियंस, वो हवा, वो एयर अंदर जा रही है, वो बॉडी का जो रंग है, आपकी क्ले की जो मिट्टी है, उसका रंग जो है वो ब्लू है. जब येलो एक्सपीरियंस, येलो एयर आपके ब्लू कलर के जिस्म में जाएगी, when it comes out, what color will it be? Green. Green. Who and what inside your body mixes the yellow with the blue? How much blue, how much yellow? Who chooses? Who chooses the quality, quantity of your clay and of the air that you're breathing in?
What shade of green is going to be created? Goes in yellow, comes out green. Blue तो किसी को नजर ही नहीं आया क्योंकि वो तो अंदर है ना मिट्टी का रंग. What shade of blue are you from the inside? What bits of blue get mixed with the yellow breath? This is happening as you are listening to me, as you are aware of this, as you aren't even aware of this happening. You don't even need to stop to think about it. It's actually just happening on its own. The whole mixing of breathing, the air going in, which is yellow in color, the body, which is blue, that absorbs the process, the green that is coming out of your being, merged and mixed with your रूह. जिस्म के अंदर हम रंग ले रहे हैं, जिस्म से वो रंग मिलता है. जब जिस्म से बाहर निकलता है तो वो आपकी रूह से मिला हुआ होता है क्योंकि आपके अंदर कौन है? रूह है आपकी. Al-Bari chooses the pieces, the bits that go in and get absorbed, as he alone chooses the bits that come out through you. आपकी रूह को कोई नहीं जानता, आपके अंदर के एहसास को, आपके अंदर के कमरों को कोई नहीं जानता. क्या कलर है आपके कमरे की दीवारों का आपके अंदर से, कोई नहीं जानता. हम सिर्फ ये जानते हैं कि आप जो सांस ले रहे हैं वो येलो कलर की है और जो सांस आप बाहर निकाल रहे हैं वो ब्लू कलर की है. We all breathe air, right? But are we actually breathing the same molecules of air? No. Who knows who is breathing which molecules? आपके मुंह में जाने से पहले किसको पता है कि कौन से मॉलिक्यूल्स आपके अंदर जाने वाले हैं? किसको पता है कौन से मॉलिक्यूल्स आपसे बाहर निकलने वाले हैं? Who decides which molecules your body absorbs and which to leave your being? What you take in through your experiences in life shapes and molds you. वो जो येलो कलर आप लेते हैं अपने अंदर, वो जाता है आपकी ब्लू बॉडी के अंदर. दिस इज लाइक योर एक्सपीरियंसेस, यू टेक इट इन. वो जो आपने बर्दाश्त किया, टॉलरेट किया, जो भी आपने जिया लाइफ में, वो आपको शेप करता है और आपको मोल्ड करता है. योर पास्ट लेसन्स एंड एक्सपीरियंसेस क्राफ्ट योर वेसल. The shade of the blue you are from the inside depends on how much blue your Allah has put in your clay. The yellow experiences that happen to you in your life might be similar to others, but are they going to mix with the blue with your inside and create the same shade of green as your neighbors? वही एक्सपीरियंस जब किसी और को मिलता है और आपको मिलता है, मीनिंग येलो कलर की जो एक्सपीरियंस आपको मिली, आपके जिस्म का रंग अंदर से कौन से रंग का कौन सा शेड ब्लू का है, किसी को नहीं पता. वही एक्सपीरियंस किसी और ने किसी और तरीके से एक्सपीरियंस किया और उससे कुछ और सीखा. वही एक्सपीरियंस आपने किसी और तरीके से किया और कुछ और सीखा, राइट? उस बंदे ने किस तरीके से निकाल के उस एक्सपीरियंस को नेगेटिवली लिया या पॉजिटिव लिया, आपने किस तरीके से वो एक्सपीरियंस को जिया और किस तरीके से उससे क्रिएट किया, ये लेसन सीखा या बेटर हो गए, वो आपके ऊपर है, वो आपकी ब्लू के ऊपर मैटर करता है. Now, every piece is crafted by Allah individually, meaning the yellow of the experiences, the shades of your blue clay, and the creation of green through your story are all by Ya Bari. So then, if each one is individually crafted, then how can anyone or anything be the same? Why do we have the desire to be like everyone else? Why do we want to blend in and not stand out? Why do we not accept the differences and value our similarities? Why do we not celebrate ourselves as individual beings and always want to be seen, heard, and valued by others? Why are we in need of approval from the external people? They aren't the creator of the yellow that grows in you. They don't know the shades of the blue of your clay.
They are not even interested in the green that you create. So then why do they matter? Why do we keep changing our tones and colors just so that we can be like them? Because we don't trust Allah. And so we don't trust what He is creating for us, within us, and around us. We don't trust the color yellow that He gives us, meaning the experiences. We don't trust what happens within us is something that He wants to for us to experience. We don't trust that we have the power to create beauty into this world. It's because of our trust that we deny all of these colors. It is our state of trust in Him that doesn't or does let us resist or flow with letting the yellow be merged with the blue to create the green. हम जब येलो एब्जॉर्ब करते हैं, कोई एक्सपीरियंस एब्जॉर्ब करते हैं, we don't approve those experiences we've had and we judge the clay He's used to create us, and we aren't confident in the beauty of the green we can create. So रंगों के थ्रू 3 रंग हैं, उनके थ्रू वो आपकी पूरी जात को प्योरीफाई करना चाह रहे हैं. Every time you breathe in, every time you go through an experience, we judge the experience by saying, we don't approve it. We say, ये तो ठीक नहीं हुआ, मेरे साथ ये क्यों ऐसे हो गया, मैं तो ये चाह रही थी. हम खुदा बन जाते हैं और हम कहते हैं यार ये मेरे साथ नहीं हो सकता. I don't approve of this experience. मैं ये येलो कलर नहीं ले सकती. Then we judge the clay. अब वो एक्सपीरियंस आपके अंदर आ गया है, यार मैं ये कैसा फील कर रही हूँ, मैं ऐसा क्यों फील कर रही हूँ. We judge the clay that He has used to create you. And then we aren't confident in the beauty. यार मैं नहीं कर पाऊंगी ये, मैं नहीं कर पाऊंगी, मैं इस काबिल ही नहीं हूँ. तो हमने जब येलो को नहीं एक्सेप्ट किया, हमने जब अपने ब्लू को नहीं एक्सेप्ट किया, तो जाहिर सी बात है ग्रीन तो हमें बनेगा ही नहीं. जब हम ग्रीन को नहीं एक्सेप्ट करे तो ब्यूटी तो हम तो मोमेंट बन ही नहीं पाए. राइट, बिकॉज मोमेंट तो खूबसूरती क्रिएट करता है ना इस दुनिया में. अल्लाह की वेसल को, अल्लाह की जात को अहमियत देता है. हम तो ना जो वो दे रहा है उससे खुश हैं, ना जैसा उसने हमको बनाया हम उससे खुश हैं, और ना ही हम अपने आप को इस काबिल समझते हैं कि हम कुछ कर सकते हैं अपने अल्लाह के लिए. It is when we trust Him, we surrender to the flow of His choices and allow His wishes to become our, knowing that what we wish is His. जब हम उसके रंगों को, वो जो शेड ऑफ येलो के एक्सपीरियंसेस वो हमें दे रहा है, उनको एब्सॉर्ब करते हैं बाय द अंडरस्टैंडिंग कि मेरी ब्लू क्ले में इतनी खूबसूरती है कि जब वो येलो जो भी अल्लाह ने दिया है वो खूबसूरत शेड ऑफ ब्लू से जब मिक्स करेगा जो मेरे अंदर है मेरी जात के, ऑटोमेटिकली वो वही प्रोड्यूस करेगा शेड ऑफ ग्रीन that Allah will be happy with. So we don't doubt our experiences. The yellow, we don't doubt the yellow coming in through our experiences. We trust the blue of our body. We surrender to the green of our being. We become the shade and structure of His love. हमें येलो भी पसंद है जो उसने दिया, मतलब आपका पास्ट, आपके एक्सपीरियंसेस. हमें ब्लू भी पसंद है जो शेड उसने हमारे अंदर दिया, बिकॉज आई ट्रस्ट माई अल्लाह कि उसने मुझे वैसा ही बनाया जैसा वो चाहता था. एंड आई सरेंडर टू द ग्रीन ऑफ माई बीइंग कि मैं जो यहाँ पर करने के लिए आई हूँ वो मेरा अल्लाह मुझे मदद करेगा करने के लिए. जब मैं ये तीनों चीजों को, डाउट खत्म हो गया, ट्रस्ट हो गया और सरेंडर हो गया, मुझे कोई डाउट नहीं है कि जिस रास्ते पे से वो मुझे लेकर आया है वो मेरे लिए ही था. और द शेड्स ऑफ येलो ही हैज क्रिएटेड फॉर मी एंड गिफ्टेड मी वाज ओनली एंड ओनली फॉर मी. वो येलो कलर शेड सिर्फ आपके लिए बनाया गया है, क्योंकि वो इंडिविजुअली बनाता है ना. वो जो येलो कपड़ा उसने आपको दिया जिससे आपकी जात का पुर्जे काटे और वटेवर, वो आप ही के लिए बनाए थे ना. तो मुझे कोई डाउट नहीं है कि उसने ये जो येलो शेड यूज किया या मुझे ये एक्सपीरियंस दिया या इसमें कोई गड़बड़ है. मैं फुल फॉर्म में उसको, उससे डाउट हटा देती हूँ. ये मेरे लिए जरूरी था तो इसलिए उसने मुझे ये येलो शेड ऑफ लाइफ एक्सपीरियंस दिया.
जब मुझे येलो पर यकीन हो गया, मुझे कोई डाउट नहीं है कि मेरे अल्लाह ने मुझे उन येलो एक्सपीरियंसेस से खड़ा किया है, तो मुझे क्या चाहते, मैं बार बार उसने मुझे दिखाया कि येलो जो मैं दे रहा हूँ तुमको, ये एक्सपीरियंस अच्छा है तुम्हारे लिए। मुझे पता है तुम्हारे लिए क्या अच्छा, तुमको नहीं पता तुम्हारे लिए क्या अच्छा। What happens there? We trust the vessel. We trust our body. He values us so much that he's given us a unique, our own shade of yellow in the form of experience. हमें हमारे जिस्म से पे ट्रस्ट हो जाता है। हमें हमारे जिस्म से वो जो ब्लू कलर की मिट्टी का शेड उसने हमें बनाया है, उससे मोहब्बत हो जाती है। क्योंकि हर पीस आपके कपड़े का, आपकी जात का, आपकी कहानी का, आपकी पूरी पूरी जिंदगी का हर एक पीस, हर एक येलो शेड उसने सिर्फ और सिर्फ आपके लिए बनाया है। क्योंकि वो जानता है कि वो जो आपके जिस्म के अंदर उसने ताकत दी है, द कलर ऑफ ब्लू इन योर क्ले इज what will mix and merge with your yellow. And that's when you surrender कि मैंने जो यहाँ करना है जिससे मेरा अल्लाह मुझसे खुश होगा, मैं वो कर पाऊंगी। क्योंकि उसने मुझे येलो दिया है और उसने मुझे अंदर ब्लू दिया है। जब मुझे डाउट नहीं है उसके येलो पर, जब मुझे फुल ट्रस्ट है मेरे ब्लू होने पर, मेरे ब्लू शेड पर, तो वो जो ग्रीन मैं यहाँ बनाने के लिए आई हूँ, मैं सरेंडर करती हूँ कि वो जो भी ग्रीन कलर बनेगा वो मेरे अल्लाह का दिया हुआ तोहफा है। और वो मैं फुल फॉर्म में उसको रिसीव भी करती हूँ, एक्सपैंड भी करती हूँ, एक्सचेंज भी करती हूँ। एंड ऑटोमेटिकली आपने जो अंदर लिया, मीनिंग आपके एक्सपीरियंसेस, आप जो अपने जिस्म से एक्शन लेंगे ब्लू कलर के साथ, वो भी आप ट्रस्ट के साथ लेंगे। जब आप सरेंडर करेंगे कि वो जो भी ग्रीन शेड बनकर आएगा मेरे अंदर से, मैं जो भी इस मोमेंट में, मुझे तूने जो पर्पस दिया है करने के लिए, मुझे ट्रस्ट है। आज मैं सिर्फ लिख रही हूँ, कल मैं सिर्फ पेंट कर रही हूँ, परसों मैं दोनों में से कुछ भी नहीं कर रही, सिर्फ सो रही हूँ। आई एम ओके इन दैट, because the color green that has to come out through me is maybe coming out through doing nothing today. And on one day, I do 10,000 things. One day, I do just one thing. One day, I do only three things. I am surrendered कि वो जो ग्रीन रंग निकलना है मेरे दिन में, वो मेरे अल्लाह निकलवा देगा। When you reach that stage, you become the shade and structure of his love. मतलब आपका कोई भी शेड हो, आपका कोई भी फॉर्म हो, मतलब आपके यहाँ कोई भी एक्सपीरियंस हो, पास्ट हो, और आपका किसी भी तरह की बॉडी हो, आप कैसे हो, काले मोटे नंगे भद्दे बुढ़े, लंबे बाल काले बाल सफेद बाल, अच्छे नाखून नहीं नाखून, कमजोर घुटने मोटा पेट, जो भी आपके साथ है, आपका स्ट्रक्चर, शेड मतलब आपके अंदर, आपकी रूह, आपका रंग, आपका एहसास, आपके इमोशंस। You become the shade, meaning all that you feel inside you, you are in acceptance of. All that you are on the outside, meaning your body, you are in acceptance of. Automatically, आप क्या बन जाएंगे? जब आप क्वेश्चन नहीं करेंगे अल्लाह के येलो रंग को, आप क्वेश्चन नहीं करेंगे अपनी मिट्टी को, अपनी जात को, अपनी एक्सपीरियंसेस को, और आप अपने दिल के रास्ते से चलकर अपने अल्लाह को खुश करने का सोचेंगे और ग्रीन कलर क्रिएट करेंगे सरेंडर होके, तो ऑटोमेटिकली आप क्या महसूस करेंगे? उसकी मोहब्बत। आप उसकी मोहब्बत बन जाएंगे। When we become the shade, meaning आपकी जो रूह है उससे आप satisfied हैं, और आप अपने जिस्म से satisfied, meaning all your physical reality. When we become the shade and structure that exudes his love, then there is no chance of inconsistency within you. For all in you reflects his constant attention to detail, as he only and only, he is the only one shaping you and your reality. आप में इनकंसिस्टेंसीज के कोई चांसेस रहते ही नहीं। जब आपको ये समझ आ जाए कि मेरा हर एक्सपीरियंस उसने डिजाइन किया था, उसने रंग का येलो कलर चूज किया था, उसने अटेंशन के साथ
एक एक शेड येलो का मेरे अंदर ब्लू जिस्म में डाला, एक एक डिटेल, एक एक मॉलिक्यूल जो आप अंदर ले रहे हैं, वो आपके जो मॉलिक्यूल अंदर की जगह पे जाके मर्ज करेगा, उसको सबको अटेंशन दी उसने, डिटेल, अटेंशन टू डिटेल, as he alone, as he only is shaping you and your reality. तो inconsistency की तो बात ही नहीं आएगी. There is no chance. There is no chance of faults, for he makes no mistakes. Every molecule, every shade, every stroke is done in precision and perfection. There remains no space of faults, for he has none. वो जिसमें कोई कमी नहीं है, वो जिसमें कोई फॉल्ट्स नहीं है, क्या वो आपको बनाएगा जिसमें हमेशा फॉल्ट्स होंगी? आप में फॉल्ट्स हैं, दैट इज योर आपके जो भी फॉल्ट्स हैं वो आपके खुद के लिए हैं, टू अंडरस्टैंड दैट ही इज फॉल्टलेस, राइट? बट टू से ओके, मैं एरोगेंस में नहीं जाना है, बट एक्सेप्टेंस में जाना है कि हाँ, मेरे अंदर जो फॉल्ट्स हैं, ये फॉल्ट्स नहीं है बिकॉज अल्लाह कोई मिस्टेक नहीं करता है, क्योंकि वो मुझे परफेक्शन और प्रिसिजन के साथ बनाया है, और वो मुझे ये बता रहा है कि अगर मेरे अंदर जो भी फॉल्ट्स हैं, ही इज फॉल्टलेस. सो डोंट गो इनटू द एरोगेंस ऑफ लाइक कि मेरे अंदर तो कोई गलती नहीं है. नहीं नहीं, हमारे अंदर है. देयर इज नो चांस ऑफ फॉल्ट्स इन हिज क्रिएशन. वो जब आपको बनाता है तो आप में कोई फॉल्ट्स नहीं डालता कि मैं नादिया में ये 2% फॉल्ट डाल दूंगी, मैं हमना में ये 10% डाल दूंगा फॉल्ट. इस तरह की चीजें नहीं करता. ही क्रिएटेड यू with perfection and precision. It is us who did not take care of our own selves because we need him to help us get through that what we need to in our faults, right? So please don't go into the arrogance side कि आप में कोई गलती नहीं है. वो कोई गलती नहीं करता. There is no chance of blemishes. वो जब बनाता है, he creates आपको एक जब आप कोई चीज प्यार से बनाते हैं, जब आप अपने बच्चे को सुला रहे होते हैं, आई वांट यू टू गो इनटू दैट फीलिंग. या कोई आपके अम्मा अब्बा बुजुर्ग हैं जिनसे आप बहुत प्यार करते हो, वो सो रहे होते हैं, राइट? वो एनर्जी में जाने की कोशिश करें. अल्लाह जब क्रिएट करता है वो इतना स्मूथ होता है और इतना सॉफ्ट होता है, इतना सटल एंड जेंटल होता है कि उसमें कोई जल्दबाजी नहीं होती है. सो व्हेन वी थिंक ऑफ ब्लेमिशेस, ब्लेमिशेस तो तभी आएंगे ना जब हम हप पचक का पक्का लगे, जब पचक चक पचक करेंगे, राइट? अल्लाह हमारी तरह तो नहीं क्रिएट करता. उसने जब आपको बनाया तो उसने उसकी मूवमेंट वाज स्मूथ. देयर वाज नो पोकिंग यू, देयर वाज नो scrapping you, there was no rubbing you with sandpaper or anything. It was smooth and soft. You're the structure and shade of his love. तो लव जब आप सोचते हो तो क्या आप बच्चे को झिंझोड़ सो जाओ सो जाओ सो जाओ कर रहे होते हैं? यू लाइक काइंड ऑफ लाइक सॉफ्ट एंड यू लाइक सटल. उसको आराम से उसके बाल छुएंगे, आप उसको प्यार करेंगे, उसकी ब्रीदिंग को सुनेंगे, आप उसके बाजू लेटेंगे तो आपको सुकून मिलेगा. That every aspect, every single creation is a reflection of Allah's peace. Ya salam. That it feels for its creation. जब फरिश्तों ने कहा कि ये आप जो बना रहे हैं इससे फसाद होगा और खून की नदियां बहेंगी, whatever होगा, did Allah reply in like agitation or aggression in any way? I know that what you don't know. He believes that when he created us, his state of peace is inside of us. The peace is our connection with him. The peace is us knowing that he is our Malik. And so how can there be blemishes जब वो आपको प्यार से स्मूथली सटल और जेंटली तैयार और बना रहा है? उस चीज में कैसे कोई ब्लॉची प्लॉची पेन आ जाएगा? वो तो इतने प्यार से बना रहे हैं ना, हर चीज को देख कर समझ के, ऐसे और ऐसे. एवरीथिंग इज प्रिसाइज एंड इन परफेक्शन विद नो फॉल्ट्स इज हिज क्रिएशन. सो देन how can
he create with his full presence have blemishes in its appearance. कैसे हो सकता है कि आपका जो मोल है आपके मुंह पर या आपके जो नाखून है उनको उसने अहमियत ना दी हो, उनको प्यार से बनाया उसने? कैसे हो सकता है कि वो बस जल्दबाजी में आपकी नाक पकोड़े जैसी बना दे? वो नहीं, he is so present with you. He is so peaceful with you. He's so soft and gentle in the act of creating you. कैसे वो ब्लेमिश कर सकता है? आपकी अपीयरेंसेस कैसे कैसे वो नहीं होंगी जो वो चाहता है? Like how? There is no chance of defects in his creation. When every piece is created with a specific purpose, कोई मकसद था आपको बनाने का, that what he knows and I and you don't know, वो specific purpose के लिए आपको create किया गया. With a specific purpose and intention that every piece fits in with each other, for it was made for each other, keeping both in mind. So how can these be in any space of defect in his, how can there be any space of defect in his creation? There is no chance for imperfection, right? He who created all of creation is perfect in all of its existence, in all of its essence, the seen and the unseen. In the seen, I don't know what this word lies the perfection, sorry. In the seen lies the perfection, and in the unseen, sorry, in the seen lies the perfection of the unseen, and in the unseen lies the perfection of the seen. For all that's coming out of the one who is perfect, how can it have any space for imperfection? Seen में unseen की perfection होती है. वो जो हमें दिख रहा होता है उसके पीछे एक unseen layer होती है, उसमें भी perfection होती है, और जो हमें दिख रहा होता है उसमें भी perfection होती है. वो जो हमें नहीं दिख रहा होता है उसमें भी perfection होती है, और जो हमें दिख रहा होता है उसमें भी perfection होती है. So then how can there be any space of imperfection in that what he creates? Yellow में कैसे imperfection होगा? Blue में कैसे defect होगा? Green जो बनेगा उसमें कैसे blemish create होगी? So next time you question yourself on how you are the way you are, remind yourself, you are the way you are for he chose for you to be that way. Come into the acceptance of being that what he created you as. You are not created to fit in or blend in, for that would be so easy for Allah to do. He created you to show you not who you are or how perfect or flawed you are, but how perfect and patient he is as a creator. Your existence does not speak about you being beautiful. Your existence speaks about the perfection of your Allah's beauty. You are the creation of He who only creates beauty. So value yourself not for who, what, how, and where you are, but for the simple fact that He chose for you to be the way you are. For that is His perfection. Shaitan wants you to blend in with the others, compete with them, compare with them, constantly look at them and feel insecure. They have it, I don't. I have it, they don't. Constantly be in that arrogance and unworthy state. He wants you to follow like a sheep. Be like everybody else. Straighten your hair, wear the same color that's in fashion, go to the same brand and buy the same clothes, do a birthday party exactly with the same things that your friend did.
You know, just keep focusing on dunya, keep focusing on following each other, keep focusing on wanting to be like the other. But Allah saying, "Maine to banaya hi nahi aapko ek jaisa." For you to want to be like anybody else is one of the biggest insults towards Allah's creation of who you are. For you are choosing to be sheep when He created you as a wolf. For you are choosing to crawl when He created you to fly. Allah does not, Allah says, sacrifice the sheep and I will give you all that you want. Your love, your son, your name, your ummah, your everything. But we constantly want to be sheep. We do not want to be connected to Ya Bari. If you and I were connected to Ya Bari, we would recognize the beauty of the shades of yellow that He gifts us in our experiences. We would value the blue that He has created us with. We would value the green that we are here to spread and share with the world. Not think, you know, not think, just be blind to yourself. Don't try to get to know yourself because you're just like another sheep. You're as useless as everybody else. You're as worthless as every other sheep. What are you existing for? Nothing. You have nothing original. You have nothing to give. You have nothing, anything. You're nothing. So why that's what Shaitan wants, by the way. Shaitan wants you to be like a sheep. Not to think about, not to get to know yourself, not to do your healing. Put the world before everything else. Make everybody important. Give the best roti to the one you love. Because you don't love yourself enough. You don't deserve the good roti. They do. Give it to them. Be the sheep. Be like your ancestors. Be like all the people before you. Have no existence of your own. Don't connect to your body because that's, he just creates the original, but don't worry, you're a slave. You're a slave to this dunya. Stay in this dunya, attached to your dunya. Keep feeling unworthy. Keep feeling unworthy in yourself and keep in your, headspace of looking outside of you in competition and comparison. Look at your friends. Be like them. Why are you different? Why do you have to upbring your child differently? Why do you have to question the norm? Why aren't you just, why are you creating chaos? Why are you just not flowing with everybody else? Be like a sheep. That's what Shaitan wants. And Shaitan doesn't want you to connect to Ya Bari because Ya Bari to says, I've created you, every single piece of you individually. But if you were individual, then you wouldn't stand out. You would stand out. But Shaitan doesn't want you to stand out, right? He wants you to blend in. Be like everybody else. Have no importance. Think nothing. Just keep going. Blah, blah, blah. Don't create music. Don't stand out. Blend in. Say things that don't matter. Make other people happy. Just go blah, blah, blah. When you connect to your body, you connect to the inside true essence of your ruh. Shaitan doesn't want you to get to your ruh, by the way. And so he wants you to focus on all the needs of your body. Stay in your body. Eat the food like everybody. People have 5 iftar dishes, make 5 iftar dishes. Your ancestors made fruit chaat, dahi bada, and pakoras. That has to be there on the table at iftar, because everybody just, that is what iftar is. Oh my God, how can you have iftar without fruit chaat? Oh my God, how can you have iftar without whatever your nani made? You're not using the right recipe. You've got it all wrong. You fused it together. What are you doing? How are you wearing clothes? How is this connected to your body when you're doing everything exactly as your ancestors did? Because you're following. You're disconnected to your body. You're disconnected to creativity. Why are you not like other people? Why are you not feeling connected to other people? Is because your body is telling you, you did not come here to connect to people, you came here to connect to me, and I will send you the people you need to connect to. When you connect to your body, you connect to the true inside essence of your ruh. And just so a disclaimer, Shaitan actually knows how powerful your ruh is. Shaitan knows that your ruh is so pure, so powerful, so beautiful, so perfect, so incredibly amazing that your ruh has the power to push out beauty in every single second of its being.
But Shaitan doesn't want you to do that. It does not want you to connect to your ruh, because then when you connect to your ruh, you will be in acceptance of your yellow, blue, and green. He doesn't want you to. He wants you to question the yellow, he wants you to question the blue, and he wants you to not create green at all. He wants you to follow everybody else and try to create the green that everybody else is creating, so that you lose your identity, you lose your value, you lose your body from within you. You are not a creation then, you're a copy of that what was created before you. You didn't use your mind, you didn't use your heart, you wasted a whole being by becoming somebody else, by choosing to be that which is someone else, for someone else's dreams. You changed your dream. You lost your individuality, you disconnected from your body because your ruh came here to do a certain job, and you disconnected from your ruh because your ruh is too original, it's too real, it's too raw, it's so beautiful, it's so pure. It's not fitting in with everybody. Why am I not fitting in with everybody? I want to fit in with everybody. That's what Shaitan wants you. And so gives you that feeling of lack. You're not good enough. Nobody wants to hang out with you. Good luck to you. You know, that's what Shaitan does. When you're too different, and you start being on your own and you start enjoying your own company, Shaitan comes and put waswasa in your head. What are you doing? What are you doing busy connecting to Allah? Why are you not getting out of the world? You must be depressed. The reason you're getting so anxious about yourself is because you're not connecting to other people. Go and talk to other people so that they'll tell you that be the green that they are. Your soul, your light, and you don't get directed by the outside waves. You see, your soul actually does not get directed by the outside waves, but you live life being the ocean itself. You're not a wave, you are the whole ocean. Shaitan wants you to be a wave and try to be perfect as a wave, and if you're not like every other wave, then you are a loser. Allah says, when you are living with your soul connected to your body, you don't care about the quality of your waves because you've recognized that you are the ocean itself. All that you need is within you, for that is how vast you are from inside of you. That is how unique Allah's created you, because you are the ocean itself, not a wave, not a drop. You are the ocean. Ya Bari, the one who created you for an individual purpose, cannot be performing an individual task till you value how individually created you were by him. You were created with individual ingredients that no other household has. So how can that what you create be like anybody else? You keep comparing the ingredients, you keep comparing the cake that you create, you keep comparing how others will taste your cake. But the cake was created by the ingredients given to you by your Allah, Ya Bari. They were individually chosen for you. The cake that got created through you, through those ingredients, was something that He needed for you to create. You didn't create the cake for other people, you created it for yourself, so that you are able to serve your Allah with the cake that you are. You are perfect in who you need to be in this very moment. He knows that what you don't. Value who you are, stand out, speak your truth, own your journey, be the shade of yellow, be the shade of blue, and allow the green to flow out of you. He knows that what you don't. And He is who you belong to, and to Him, inshaAllah, you will return. Through the journey, He makes you not only have visual experience of taking in yellow, connecting to your blue, and creating green,
He connects you to your breath, meaning at every single second, he wants you to remember Ya Bari. Every single second, you are creating something new. Every single second, Ya Bari is reminding you no inconsistencies, no faults, no blemishes, no defects, and no imperfections. I really hope you enjoyed the session, guys. And with every breath, you are able to remember what a creative being you truly are. Inshallah.